Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. Hailing Prime Minister Narendra Modi's World Environment Day message to protect biodiversity, environmentalists have requested him to create a national green police to check ecological violations and frame an inclusive environment policy that takes care of nature and does not destroy it under the guise of development. In an ongoing online campaign that enjoys the support of about 10,000 people, the environment NGO Nat Connect Foundation has called for a close and strict monitoring of the implementation of environmental clearance conditions. Nat Connect Foundation Director B.N. Kumar appealed to the Prime Minister to declare the National Green Police as an Environment Day project and issue guidelines for the states. जो पर्यावरण दिवस है यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जिस दिन हम लोग खास करके पर्यावरण के ऊपर ध्यान आकर्षित करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम करते आ रहे थे, लेकिन इस समय कोरोना के चलते, लॉकडाउन के चलते कोई कार्यक्रम तो आउटडोर प्रोग्राम तो कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि कोई बाहर जा नहीं सकते हैं। इसलिए हमने इसको एक डिजिटल स्वरूप देते हुए एक ऑनलाइन कैंपेन शुरू की है। ऑनलाइन इवेंट्स कर रहे हैं हम लोग ट्विटर, फेसबुक और change.org की माध्यम से, और change.org के माध्यम से हमने एक पिटिशन शुरू की है। इनफैक्ट पर्यावरण को लेकर हमारा पिटिशन तो काफ़ी समय से शुरू था, उसको लगभग 10,000 लोगों का समर्थन मिल चुका है। उसी प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने एक पिटिशन अभी प्रधानमंत्री को भेजा था, उनसे कहते हुए कि कोरोना से जो हमें सीख मिली है, जो लेसन्स मिले हैं, सीखने को मिले हैं, उनको ध्यान में रखते हुए एक कॉम्प्रहेंसिव एनवायरनमेंट पॉलिसी विच इज़ हेल्थ ओरिएंटेड, यानी हेल्दी एनवायरनमेंट पॉलिसी की बहुत आवश्यकता है, जो कॉम्प्रहेंसिव हो, और जो भी प्रोजेक्ट हम लोग सरकार की तरफ से या सरकार इम्प्लीमेंट करने वाली है, उसमें पर्यावरण के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की बहुत ही आवश्यकता है। हालांकि एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है, एनवायरनमेंट पॉलिसीज भी है, प्रोजेक्ट को उन लोगों एनवायरनमेंट क्लियरेंसेस भी देते रहते हैं, लेकिन क्लियरेंस देते समय वो पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है उसका कोई मॉनिटर होता नहीं है। वो मॉनिटरिंग भी बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से होनी चाहिए, और जितना भी पर्यावरण संबंधित वायलेशंस है उनके ऊपर भी स्ट्रिक्ट कार्रवाई होना भी बहुत ज़रूरी है। मौजूदा पुलिस जो है अपने काम में बिजी है, अपना रेगुलर क्राइम वगैरह संभालते हुए, और कोविड में भी उनके ऊपर काफ़ी सारा प्रेशर आया हुआ है, और इसीलिए हमने सोचा था कि पर्यावरण संबंधित जो भी क्राइम्स हैं, एनवायरमेंटल क्राइम्स, उनको संभालने के लिए, उनकी देखरेख करने के लिए, उनको टैकल करने के लिए एक विशेष पुलिस व्यवस्था की ज़रूरत है, जो सिर्फ एनवायरनमेंट डेवलपमेंट्स के ऊपर ही ध्यान रखें। इसलिए हमने महाराष्ट्र गवर्नमेंट से पहले अपील की थी एक ग्रीन पुलिस की स्थापना करने के लिए। ये प्रपोजल जो है अभी फ़िलहाल होम डिपार्टमेंट के अंदर स्टडी के अंदर है, और आगे चलते हुए हमने प्रधानमंत्री को भी अपील की थी कि इसके ऊपर एक नेशनल पॉलिसी की ज़रूरत है, एक नेशनल ग्रीन पुलिस की स्थापना की जाए, और केंद्र सरकार की तरफ से उसके ऊपर गाइडलाइंस इशू करें सारे स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को, ताकि वो भी अपनी ग्रीन पुलिस की स्थापना कर सके। इसका एक पॉलिसी डिसीजन, पॉलिसी गाइडलाइन अगर केंद्र से आए
वो बहुत फलदायक होगा, दैट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर द कॉज। और क्योंकि पर्यावरण को लेकर जितने भी वायलेशंस हो रहे हैं वो दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। आप लोगों ने देखा होगा, हमने वेटलैंड्स रिस्ट्रिक्शन, मैंग्रोव रिस्ट्रिक्शन इत्यादि के ऊपर काफ़ी आवाज़ उठाई थी। मैंग्रोव हाईकोर्ट द्वारा निर्मित मैंग्रोव कमेटी और वेटलैंड कमेटी ने भी इसके ऊपर काफ़ी आशंकाएं जताई थी, और MCZMA जैसे अथॉरिटीज़ को कहा गया था इसके ऊपर योग्य कार्रवाई की जाए। नई मुंबई, SEZ, JNPT, इन सारी संस्थाओं की तरफ से, संस्था की ओर से जो भी प्रोजेक्ट चल रही है उसमें काफ़ी सारे एनवायरमेंटल वायलेशंस हो रही है। और सिर्फ मुंबई में नहीं, बाकी हर जगह, बाकी अन्य शहरों में भी, अन्य कोस्टल टाउन्स में भी इसका बहुत सारा ये वायलेशंस का बहुत बुरा परिणाम हो रहा है। इसको देखते हुए हमने प्रधानमंत्री को इसलिए सजेस्ट किया था कि एक नेशनल ग्रीन पुलिस की स्थापना की जाए। Nand Kumar Pawar, head of Shri Ekveera Eye Pratishthan, too believes that this is the need of the hour. Hello everyone, I am Nand Kumar Pawar from Shri Ekveera Eye Pratishthan. I wish everyone a very very happy World Environment Day, which we celebrate on 5th of June every year. But today the question is whether are we in position to or state in celebrating this day? The answer is obviously no, because the way at which the degradation and destruction of environment is happening throughout the world is truly a matter of concern for all of us. Recently we have heard about the Amazon jungle, which is the largest rainforest in the world. We have been losing this jungle at very rapid pace. 3 football field size jungle we lose at every 2 minutes. And environment doesn't have any geographical boundaries that will be impact on the entire world, which are essentially lungs and kidneys of the world. Let's see what's happening here in Indian front. Recently you might have heard about the EIA notification, which is issued by the Ministry of Environment and Forest, Government of India, on 12th of March 2020, which states that environment clearance for the future projects may not be mandatory, may not be compulsory. There will be gross relaxation in the terms and conditions of EIA, which was essentially the shield and protection for the environment. Now government maintains that these are the obstacles, the hurdles in the way of development, which is completely wrong. We very well understand what happens when projects like mining projects, road construction, dam building, airport construction are being undertaken. What happens? There are thousands of lakhs of trees are being felled, and every single tree has economic value of or worth of rupees 3,50,000 per year, and we get this service without any charge, free of cost. Also, the trees are essentially the homes and habitat for so many insects, birds, mammals. We are not supposed to destroy them. They are our partners. We can't undermine their existence. Now let's understand what is EIA. EIA is Environment Impact Assessment. Any project which is coming up, before implementation, there is a scientific study is being undertaken to study the every element of project, especially its impact on the environment and the local stakeholders. After studying all these things in detail, the clearance is normally given, which was the mandatory earlier. Subsequently, there the public hearing and public consultation are taken place. Their consultation with the local stakeholders, their views, their ideas. All those things were mandatory. Now government says this is no longer required now. So what will happen when there is no EIA in place? Let's talk about the Uran. Uran is supposed to be the largest coastal wetland of Maharashtra. I have been fighting here for last 12 years against the degradation and violations of environment carried out by the various project proponents, planning authorities like CIDCO, JNPT, Reliance SEZ, JNPT SEZ and so on. These project proponents have been destroyed almost 8 to 10,000 hectares of ecological sensitive area. Mangroves, creeks, wetlands, natural water bodies.
These areas are essentially CRZ 1A area, has highest protection, essentially fishing ground for the local community, habitat for migratory birds. There are lakhs of migratory birds habitat here in Uran. Uran is very well famous for its rich biodiversity, rich fishing areas. But these project proponents have destroyed them altogether without any clearance. Before commencing any project on this ecological sensitive area like this, project proponent need to seek a prior permission from Ministry of Environment and Forest, Maharashtra Coastal Zone Management Authority, Honorable Bombay High Court. But nobody seems to bother about any clearance, although some proponents claim to have some permissions, but they have grossly violated far more excessive area than what they got permission for. Now what will happen when this area will be reclaimed? There are 27 villages in entire Uran Taluka, out of which 20 villages were submerged during last monsoon of 2019. This was happened first time in the history of Uran. That was never be the case. There are many villages which are experiencing unseasonal flooding on every high tide. Now my worry is that the development which is proposed at Dronagiri node on 2,700 hectares of ecological sensitive area, mangrove, wetland, creeks, are essentially situated 2.5 meters below the high tide line, which admits by the CIDCO and legal paper says so. But who will bother about what they are proposed to do? Who will take care of the people who are going to be submerged? We want development at what cost? We are killing people. The development is killing people. So I appeal to the government of India, rethink about giving relaxation in EIA. Rather it should be more strict so that whatever little has left will be protected for the future generation. And one more thing I would like to mention here especially, the COVID-19 where entire world is facing currently is a result of playing with the nature. We are undermining the importance and value of the wildlife and the nature. So government should be rethink about what they are proposed to do. Don't cancel EIA, it should be more strict so that people can be saved from being drowned in the coming monsoon. Thank you very much. The demand being reiterated on World Environment Day comes in the wake on nature's fury that the world is experiencing. The government needs to act on the demand and act quickly. For Awaaz Today, Shahnawaz Jedi, Navi Mumbai. Subscribe to Awaaz Today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.